everyone, today we'll be learning Euler's theorem for homogeneous function of three variables. If you understood homogeneous Euler's theorem for two variables, then it will be quite easy for you to understand this one, Euler's theorem for homogeneous function of three variables. It is quite important concept because in exam also they ask the questions which are based of three variables throughout all universities. So let's start with, first of all we will look for its statement, then how to prove it, and some questions which are important. So let's start with statement first. So statement क्या कहता है कि if u is a homogeneous function of degree n and it's in terms of three variables which are nothing but x, y and z, then what we can write it is x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z which is equal to n into u. n जो होता है कि order होता है equation का. So this was the statement. So how to prove it? So first of all जो दिया हुआ है कि if u is a function, homogeneous function of degree u in x and x, y, z terms. So let's consider that function u, and since we are saying that it's a homogeneous function, then we have learned how to represent the homogeneous function is in this form: x to the power n f of y by x into z by x. So जो टू वेरिएबल्स में हमने देखा था वो सिर्फ एक ही था y by x, यहाँ पे z एक एडिशनल वेरिएबल हो चुका है, तो ये टर्म जो है z by x वो एक ऐड हो चुकी है. अदर देन दैट इफ़ यू लुक इट्स एग्जैक्टली सेम लाइक जो टू वेरिएबल होमोजेनियस फंक्शन में जो होता था वो एग्जैक्ट वही है, सिर्फ ये जो है पार्ट वो ऐड हो चुका है क्योंकि एक वेरिएबल एडिशनल आ चुका है यहाँ पे. तो हमने इसको कंसिडर किया है इक्वेशन 1. हमें अब उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है यूलर्स थ्योरम का वो वही कहता है कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल जेड. सो हमें इस u को विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली. सो लेट्स स्टार्ट विद डूइंग दैट. सो यहाँ पे मैंने डेल यू बाई डेल एक्स किया हुआ है. With respect to x, I differentiated it. I will write it here for your understanding. What is our u? U is nothing but x raised to n f of y by x and z by x. This is nothing but the equation 1. Here I wrote it for your understanding again. Here we will apply the simple chain rule. We will apply here. So what chain rule says? First function as it is, x raised to n function as it is. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जहाँ पे मैंने लिखा है f डैश ऑफ y बाई एक्स एंड z बाई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग. वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी वही हो जाता है. y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये z एंड z बाय x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर. जब भी हम ऐसे होता है फंक्शन तो ऑल द टर्म्स वी विल सेपरेट इट विथ एडिशन साइन, लेकिन यहाँ पे z बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस z बाय एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बीच में साइन माइनस आ चुका है. अदरवाइज वी सेपरेट ऑल दिस टर्म बाय एडिशन साइन. नाउ ये तो फर्स्ट हो गया. नाउ चेन रूल, वी विल कंटिन्यू यूजिंग चेन रूल. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज जो यहाँ पे है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सिंपल चेन रूल आई हैव अप्लाइड इट हियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. Now if you look here, this function will be as it is, we will be writing it. Next step also we will continue with that. Now here if you see here, x square is the denominator here, and here also we have x raised to power n. So simple indice rule क्या कहता है कि जब भी base common है, power different है, तो we can add or we can subtract. Here it is in the form of fraction, so we can subtract those power. So यहाँ पे मैंने power को subtract किया है by using the rule of indices. So x raised to n minus 2 यहाँ पे लिखा हुआ है. ये तो डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन हो चुका. यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये इस तरह से है. सो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो y प्लस z आ चुका है यहाँ पे. सो दिस इज सिंपली दिस, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस वन.
So now same way I have done with this one. This function will be as it is and this is as it is. Simply I have did the simplification by using the rule of indices. This way we have found del u by del x. Similarly, now we can partially differentiate the equation 1 with respect to y. Again I will remind it what was the equation 1. It was x raised to n into f of y by x into this is and z by x. This was our equation 1. So now this equation we have to differentiate with respect to y. So again simple chain rule we will be applying over here as well. So first function as it is, which is x raised to n as it is, differentiation of second term which is f dash of this whole thing as it is into derivative of partial differentiation of this one. So y by x का हो जाएगा 1 by x, because with respect to y you are differentiating, y का differentiation 1 होता है, and this whole term will become 0 because z and x are the constants since we are differentiating with respect to y. So this will become like 1 by x plus 0. Now we will try to simplify this. This function we will be writing as it is, and if you look here, this is nothing but the x raised to n minus 1. Why? Because here x to the power 1, यहाँ पे x की power n है, same base है, common base, so power we can subtract it, x raised to n minus 1 आ चुका है यहाँ पे. Similarly we can write about del u by del z also. Why? After differentiating with respect to z, here simply we can write it as similarly, even though you will not find it, it's fine, but the word similarly has to be there. So x raised to n minus 1 and ये पूरा function जैसे है वैसे ही आ जाएगा. So now till now we found del u by del x, we found del u by del y, we found del u by del z as well. लेकिन यूलर्स थ्योरम का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हो, यहाँ पे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, y इंटू डेल यू बाई डेल वाई एंड z इंटू डेल यू बाई डेल z ऐसे दिया हुआ है. सो x y z को रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विथ हियर. दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट, है ना. सो ये मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो ये जो टर्म्स जो हमने निकाले अभी तक उनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और वी विल ट्राई टू मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स. यू कैन if you couldn't understand how you get that, you can always go back to the previous slides and refer those slides. यहाँ पे del u by del y की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी और ये जो है ये del u by del z की वैल्यू है और ये x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये y के साथ मल्टीप्लाई किया और ये z के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है. So now we will try to simplify this equation. So मैंने यहाँ पे simplification किया हुआ है. In this slide, I have combined this slide and this slide into one slide so that you will get the overall idea about the steps for your better understanding. So this is just combined, summed up slide of the previous last two slides. So after keeping this del u by del x, del y by del y and del u by del z's value over here and multiplying with x and y and z, this step we will be getting. After this we have to simplify it. How we will simplify it? Here x raised to n minus 2 is there, means what? Here x raised to n upon x square, this is how it is. यहाँ पे क्या है? x raised to n upon x, this is how it is. n raised to minus x to the power n minus 1 का मतलब क्या होता है? x raised to n upon x, right? So from this whole term till here, from here if you see here, x is the common, 1 by x is the common that we can take it out. So what will happen? If you take it out common, this will get cancelled with this one. So यहाँ पे simply रह जाएगा x raised to n minus 1 रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे रह जाएगा x raised to n. Now this x raised to n minus 1 we will be simply multiplying this whole bracket. This is nothing but the expansion, simple expansion of the bracket. So if you multiply this x raised to n minus 1 into y
एंड ये जो एफ डैश का फंक्शन है वो पूरा वहाँ पे जैसे है वैसे ही आ जाएगा. दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. x raised to n minus 1 along with this y and along with this f function, f dash function, that will be here. Similarly, this whole term I will be multiplying to this z and I will write it over here. So x raised to n minus 1 z into f dash of this function. बाकी यहाँ पे जो रह गया x raised to n, that I wrote it as it is, n into x raised to n f of y by x and z by x. ये पूरा टर्म हो चुका है x वट एवर वी डिड सिंप्लीफिकेशन ऑफ del u by del x. अब यहाँ पे भी सेम थिंग वी हैव डन इट विथ y टर्म del u by del y टर्म विच आई रोट इट हियर. Simply I have multiplied this y inside it, inside the bracket, and same way I have done it, this z I multiplied to the inside the bracket. So we just got this one. Now if you look carefully, this first term, this will, we can cancel it with this term which are exactly same, only the difference of sign, one is plus, one is minus. This one we can cancel it with this one, plus and minus. So we will left with only n into x raised to n of f of this function. And if you remember that, we can write this is nothing but our u. This was our consideration very first of the starting of the theorem. So we can replace this value with u, and this is nothing but nu, which is nothing but the RHS side, or that's nothing but the proof of Euler's theorem. This is how we have simplified it. So I will just try to sum up the things. First of all, we consider the function, since homogeneous function in 3 variables x, y, z, and then we found the partial differentiation with respect to x, y and z. And since Euler's theorem's left hand side says x into del u by del x plus y into del u by del y plus z into del u by del z, we just multiplied and added them together and just simplified it by rearranging the term and by using the rule of indices. So we came to the proof of the Euler's theorem. Hope it's very clear to you. Let's take a small break over here. Meantime, you can revise the concept. In the next video, we will be discussing this more in details.